Once again, a very warm welcome to my dear students of class 10th. This is Supriya ma'am. In our last three classes, we have been studying Chapter 1 Historiography Development in the West. We have done 1.4 Notable Scholars René Descartes, Voltaire, George Wilhelm Friedrich Hegel. Also, we have covered the topic It is Good to Know This and Leopold von Ranke. We will continue with the same topic, Notable Scholars, in the chapter Historiography Development in the West. Scholars. Let us have a look at the contributions of the few notable scholars. Notable means remarkable. 1.4 Notable scholars. The contributions of many scholars are important in the development of historiography. We have done 4 noted scholars. Today we will continue with the same topic and see the contributions of a few more notable scholars. Karl Marx, 1818 to 1883. In the latter half of the 19th century, a new school of thought arose, keeping in view the new thesis formulated by Karl Marx. According to Karl Marx, history was not about abstract ideas, it was about living people. कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास यानी जीवित लोगों के बारे में. Human relationships are shaped by the fundamental needs of people and the ownership as well as nature of prevalent means of production to meet those needs. Prevalent means common. The accessibility of these means to different strata of the society may not be equal. हम जब समाज में देखते हैं तो समाज एक जैसा नहीं है, इक्वालिटी नहीं देखी जाती. कोई गरीब तो कोई अमीर तो कोई मिडिल क्लास. तो समाज जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटा या लेयर्स में डिवाइड किया गया है. The accessibility of these means to different strata of the society may not be equal. We can see that whatever is in the society is not equally divided. किसी के पास बहुत है, किसी के पास कम है. तो हम ये देखते हैं कि समाज में समानता नहीं है. This inequality causes a division of the society into classes, leading to class struggle. और जब हम समाज को देखते हैं कि समाज में इनइक्वालिटी है, जिसकी वजह से समाज अलग अलग लेयर्स में, अलग अलग स्ट्रेटा में डिवाइडेड है, जिसके कारण हम देखते हैं कि समाज में एक क्लास स्ट्रगल है. According to Marx, human history is the history of class struggle. As the class that owns the means of production economically exploits the rest of the classes. Das Kapital, written by him, is the most referred book all over the world.
और हमें ये देखते हैं कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई किताब दास कैपिटल ये सारे समाज में, सारे संसार में आज रेफ़र की जाती है, इसकी स्टडी की जाती है क्लासेस को पढ़ने के लिए या क्लास स्ट्रगल को समझने के लिए. So here we are at the end of the points that we have discussed about Karl Marx. As you have to write your answers point wise, we have discussed it point wise. Now we will summarize it. Karl Marx 1818 to 1883. In the latter half of the 19th century, a new school of thought arose, keeping in view the new thesis formulated by Karl Marx. हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने एक इतिहास का एक नया थेसिस सामने लाया. According to Karl Marx, history was not about abstract ideas. It was about living people. कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास यानी जीवित लोगों के बारे में. Human relationships are shaped by the fundamental needs of the people and the ownership as well as nature of prevalent means of production to meet those needs. हम यहाँ देखते हैं कि ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो समाज में जो ज़रूरतें हैं, फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल है, और ओनरशिप जो हम देखते हैं कि मालकियत है, लोगों की अपनी फैक्ट्रीज़ है, कंपनीज़ है, वो उसके मालिक है ये, और जो प्रोडक्शन उसमें से होता है जो लोगों की ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है. The accessibility of these means to different strata of the society may not be equal. ये जो प्रोडक्शन होता है समाज में, समाज के लोगों के लिए बराबरी में नहीं बांटा जाता, किसी को कम किसी को ज़्यादा, इस तरीके से. इसीलिए यहाँ क्लास स्ट्रगल की बात हो रही है. दिस इनइक्वालिटी causes a division of the society into classes, और इस वजह से समाज बटा हुआ है अलग अलग स्ट्रैटा में, अलग अलग क्लास में, जिसकी वजह से क्लास स्ट्रगल होता है. According to Marx, human history is the history of class struggle, as the class that owns the means of production economically exploits the rest of the classes. Das Kapital, a book written by him, is the most referred book all over the world. Now let's look into Annal Schools. At the onset of the 20th century, a new school of historiography arose in France. फ्रांस में एक नए स्कूल का उभर कर आई और वो स्कूल का नाम है Annal School. Annal School gave a new direction to history writing. It was recognized now that history is not only about the political events, kings, great leaders, and accordingly politics, diplomacy, and wars, but also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social divisions, and their collective psychology, etc., in the historical times. The Annal Schools was started by French historians. Let's summarize. Annal School. At the onset of the 20th century, a new school of historiography arose in France. हमने देखा कि 20th सेंचुरी में एक नए स्कूल का उभर कर आई और उसका नाम था एनल स्कूल, और इसकी शुरुआत फ्रांस में हुई. एनल स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग, और इतिहास लेखन को एनल स्कूल ने एक नई दिशा दिया.
It was recognized now that history is not only about political events, kings, great leaders, and accordingly politics, diplomacy and wars. इतिहास अब केवल पॉलिटिकल इवेंट्स या किसी राजा के बारे में या किसी बड़े नेता के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में ही नहीं, ये अब इतिहास का मतलब है, इतिहास क्लाइमेट का हो सकता है, इतिहास लोकल पीपल का हो सकता है, इतिहास एग्रीकल्चर का हो सकता है, इट कैन बी अबाउट ट्रेड, टेक्नोलॉजी, means of communication, social divisions, and their collective psychology, etc., in the historical times. The Annal Schools was charted by French historians. Feminist Historiography. Feminist historiography means the restructuring of the history from the perspective of women. The writings of Simone de Beauvoir helped in establishing the fundamentals of feminism. She was French. The feminist historiography emphasized not only on the inclusion of women in history, but also on the rethinking of the male-dominated perspective of history. Dominated means control over. It drove historical research to focus in depth on various aspects of women's life, such as their employment, their role in trade union, institution, working for their cause, their family life, etc. In the historical writings after 1990, women were portrayed as an independent social class. Portrayed means represented. So let's look into it. Feminist historiography. Feminist historiography means the restructuring of the history from the perspective of women. Women के या स्त्रियों के बारे में एक अलग इतिहास ने एक नई दिशा दिया. The writings of Simone de Beauvoir, जो कि एक फ्रेंच राइटर थी, इन्होंने जो कुछ भी लिखा इसकी वजह से स्त्रियों के लिए एक नई दिशा मिली. She was French and she belonged to France. The feminist historiography emphasized not only on the inclusion of women in history, सिर्फ इतिहास में ही जो स्त्रियों का सहभाग है उतना ही नहीं, परंतु but also on the rethinking of the male dominated perspective of history. हमने देखा कि समाज में पुरुषों का एक वर्चस्व था, एक they were kept at a higher level where women were treated at a lower level. But now because of her writings, जो male dominated society थी या इतिहास के ऊपर जो पुरुषों का जो रुतबा था वो केवल उन्हीं का ही नहीं परंतु अब स्त्रियों का भी रहने लगा. It drove historical research to focus in depth on various aspects of women's life, such as their employment, their role in trade union, institutions, working for their cause, their family life, etc. और स्त्रियों का रोल समाज में और इतिहास में अब पूरी तरीके से बदल गया था, मॉडर्नाइज्ड हो गया था, प्रोग्रेस कर रहा था. In the historical writings after 1990, women were portrayed as an independent social class. और 1990 के बाद 1990 की जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स जब हम देखते हैं उसके बाद तो स्त्रियों का पूरा जीवन ही बदल गया. वो समाज में एक आज़ादी के रूप में उन्हें देखा जाता था. Now our next historian or
Our notable scholar is Michel Foucault, 1926 to 1984. The French historian of the 20th century, Michel Foucault, brought forth a new concept in historiography. He, in his book आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, argued that the prevailing practice of arranging the historical events in a chronological order is not right. He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth but attempts to explain various transitions in the past. इतिहास जो बदलाव आया है पिछले सालों में या पुरानी बातों में, उसके बारे में भी इतिहास है. Foucault felt that explaining the transitions in history is more important. He called his method the archaeology of knowledge. Archaeology of knowledge. Foucault subjected the so far unacknowledged areas by historians such as psychological disorders, science of medicine, prison administration, etc., to historical analysis. Thus, the scope of historiography kept continuously expanding. Writing of histories of various subjects like literature, architecture, sculpture, drawing and painting, music, dance, drama, films and television, etc., came into practice. So this was all about Michel Foucault. Let's summarize it. Michel Foucault, 1926 to 1984. The French historian of the 20th century. ये फ्रेंच हिस्टोरियन थे और ये 20वीं शताब्दी के हिस्टोरियन हैं. Michel Foucault brought forth a new concept in historiography. इन्होंने इतिहास में एक नए बदलाव को लाया. इन्होंने एक किताब लिखी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जिसमें इन्होंने, यहाँ वर्ड यूज़ किया गया आर्ग्यूड, इन्होंने बहस की. The prevailing practice of arranging historical events in chronological order is not right. इन्होंने कहा कि हम इतिहास को जो chronological order में रखते हैं कि 1919 के बाद 1920, 1920 के बाद 21, 22, ऐसे हम जो chronological order में इतिहास को कहते हैं वो बराबर नहीं है. He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth but attempts to explain various transitions in the past. इनके अनुसार इतिहास मतलब बदलाव, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसमें जो कुछ भी बदलाव होता गया वो इतिहास है. Foucault felt that explaining the transitions in history is more important. और Foucault को ऐसा लगा कि इतिहास में जो बदलाव होते जा रहा है उसको बताना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और इसीलिए उन्होंने अपने इस मेथड को, जो उनकी मेथडोलॉजी थी, उसको उन्होंने नाम दिया द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज. Foucault subjected the so far unacknowledged areas by historians such as psychological disorders, science of medicines, prison administration, etc. to historical analysis. और फोकल्ट ने अपने सब्जेक्ट्स बनाया. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का इतिहास पढ़ा, साइंस ऑफ मेडिसिन का इतिहास, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन का इतिहास और इत्यादि. Thus,
the scope of historiography kept continuously expanding. तो हिस्टोरियोग्राफी एक सीमित सब्जेक्ट नहीं रह गया, परंतु ये दिन पर दिन एक नए विषय के साथ बढ़ता गया, एक्सपैंड होते गया. राइटिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ वेरियस सब्जेक्ट. इतिहास केवल राजा महाराजाओं के बारे में नहीं है, इतिहास केवल किसी पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में नहीं है, किसी ग्रेट लीडर्स के बारे में नहीं, बट इतिहास ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में भी हो सकता है, जैसे लिटरेचर, जैसे आर्किटेक्चर, जैसे स्कल्पचर. हम ड्राइंग का भी इतिहास लिख सकते हैं, हम पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, फिल्म्स, इनका भी इतिहास लिख सकते हैं. एंड टेलीविज़न का इतिहास. तो फोकल्ट ने एक नई दिशा दी इतिहास को. ही गेव अ न्यू डायरेक्शन, अ न्यू स्कोप टू हिस्टोरियोग्राफी, एंड दैट केम इनटू प्रैक्टिस. So children, we are done with our lesson today, and we have covered the topics notable scholars, and along with that we have also done Annal Schools and feminist historiography. So here's an assignment based on the topic. Question number 1 is explain Karl Marx theory. Question number 2, explain Annal School. Question number 3, what is feminist historiography? Fourth, Foucault called his method the archaeology of knowledge. Give reason. And then you have concept chart here. You have to complete the concept chart of notable scholars in Europe. Please draw the concept chart with pen and also write it with pen. And please do this exercise in your fair notebook. Hope you have understood the lesson. Thank you. Take care. God bless you.